Okay, Parableen, for this to work, for this to actually give you the maximum benefit, आपने Practice. 1 घंटा रोज करना है outside of my class. Yes, ma'am. Minimum. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, so this is your accelerator bridge. Okay, so whatever we have used, जब बात करने की बारी आती है आप भूल जाते हो, so how to not forget it. Okay, and Yes, ma'am. so उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए. साथ में मैं बीच में वर्ब्स डाल दूंगी. मैंने खुद ही, क्योंकि मैं कंडाड़ी क्या क्या कि सिनोनिम्स कर लो, तो मैंने बीच में डाले हुए हैं. इसमें नहीं है तो जो इसमें भी है verbs भी आ जाएंगे और बीच में आपके synonyms भी आ जाएंगे. There. Apprendre, se développer ses compétences, parler mieux, améliorer son expression orale. ये मैंने linguistic expressions और जो basic नहीं, basic से आगे जो B1 तक के B2 तक के आपके यूज हो सकते हैं, वो थोड़े थोड़े synonyms और antonyms मैंने साथ में डाले हैं, क्योंकि तुम लोग ये नहीं कर रहे और इसी वजह से मार खा रहे. ठीक है? So, Yes, ma'am. for to start off, présenter son identité, son parcours et ses objectifs. Parcours क्या हुआ? Son identité, identity, parcours, their goals, their learning trajectory, their path, okay, their trajectory, and their objective are their goals. So who you are, what you want to do, where you're headed, your present and your future. So your current life, your path that you're taking, that means your educational journey, your work journey, and then your future goals, where you see yourself 6 months, 2 years, 5 years from now. Okay? Objectives for this class will be to introduce yourselves with confidence, to be able to answer extended basic answers, not just, yes, I like this because detailed response. Therefore, add on, you add your descriptions, you add your connectors, and you give a full response. And why you're learning French, discuss the difficulties and the goals which you face. पानी में हूँ, क्यों पानी में हूँ, what part पानी में हूँ. ठीक है ना? Figure that out clearly. जब तक आप उस बात पे क्लियर नहीं हो, रौनक स्टोव बंद कर. जब तक आप लोग उस बात पे क्लियर नहीं हो, जानिए पानी में हो तो क्यों हो, figure that out. And also discuss the difficulties and the goals. What is your end goal? हाँ, मैंने फ्रेंच करनी है. हवा में जब तक रहेगा दिमाग आपका नहीं पकड़ेगा. जब तक यू सेट योरसेल्फ ए डेडलाइन कि ये मेरी डेट है, ये अगली डेट है, मैंने इस डेट पे ये काम खत्म करके आगे निकलना है. How to use आज की क्लास में present tense correctly, simple upgrade your vocabulary and answer B1 opinion. So after we've done all our vocab and on through, you will be giving me def flash answers using your B1 question. So आपका A1 A2 की रिवीजन होते थे, पर आप बोलोगे मेरे को B1 के लिए. ठीक है? तभी हमारा वो गैप जो है ब्रिज होएगा. तभी आपके जो बीच में आप कह रहे हो जो गैप्स रह रहे हैं या जो आप भूल रहे हो, वो आपका ठीक होगा. सो तैरना सीखोगे दोबारा. इट्स नॉट दैट यू डू नॉट नो फ्रेंच. You seem to be under this illusion that you do not know French. It's not that you do not know it. It's that जब मौका आता है under stress या मौका आता है बोलने का, you seem to not be able to link the knowledge that you have and spit it out. So that link जो आपका डिस्कनेक्ट हुआ है, वो हमने वापस establish करना है. ठीक है? So target transformation before B1. J'apprends le français, c'est difficile. You have done that already. You are here. J'apprends le français depuis plusieurs mois parce que j'aimerais améliorer mes compétences. Même si cette langue est parfois difficile, je pense que la pratique régulière m'aide à progresser. You can easily give me this answer. You understand? अभी आप यहाँ पे आके बंद हो जाते हैं. You have to be able to elaborate and explain in complete sentences why you're learning French. So, j'apprends le français. Pourquoi? So, pourquoi apprends-tu le français? Answer this question. Mm, Pale simple Like answer it's no. Pourquoi est-ce que tu apprends le français? um No one word answers, no je prends translating. I want your information, I want your reason, and I want a detail for it. Go. je prends le français parce que c'est une langue importante pour mon travail et mes études et mon Et- permanent résidence. Mhm.
Très bien. So, that is a complete answer in itself. So, mon maître आपकी गलती आ रही बीच में. J'apprends le français pour ma résidence permanente. Mon et ma. Les For théories. my residence permanent. Yes. Okay. So, pourquoi apprends-tu le français? Answer दोबारा दो एक बार. Je parle le français parce que c'est une langue importante. Mon travail et Pour mon mon travail étude. et mes Pour études, mon travail et mes mes études études, et mes études. mes études, Mhm. mes études et mon résidence permanente. Yes. Et mon et ma résidence permanente. Mon résidence Ma, permanente. féminin. Ma résidence Ma, permanente. ma résidence permanente. Yes. So much better. ठीक है ना? Yes, sir. All right. Moving on to our next question. Our next discussion. ये मेरा क्यों- Okay. So, personal information. Answer naturally. So, présentez-vous. Answer, présentez-vous. Hello. Je m'appelle Aveline. Je m'appelle Aveline Kaur. J'ai 24 ans. Je suis indienne. Je parle hindi, English un peu français. Mes couleurs préférées, elle est noire. J'habite à Kelowna au Canada. Je travaille comme resident manager et Centurion Property. Ben, très bien. Je travaille comme manager à Je Ok. travaille comme manager à Centurion Property. Centurion Properties. Très bien. Alors, où habitez-vous? J'habite à Kelowna Depuis et combien de temps apprenez-vous le français? So, when you're saying, when you're presenting yourself, où vous habitez? J'habite à Kelowna depuis this many years, or I moved from here to here. Where do I live and how long have you been living there? What you liked about the place. Always go one step more to complete your description. So, où habitez-vous? j'habite à Kelowna et Colombie-Britannique au Canada depuis 5 ans. Depuis 5 ans. D'accord. Depuis combien de temps apprenez-vous le français? मैम इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को भूल गया. Depuis et since, combien de temps, how much time, apprenez-vous, apprenez is le verbe apprendre, which is, OK, got it. Je parle le français depuis quelques mois. bien, depuis quelques mois. Et pourquoi avez-vous choisi le français? Mmh. Pourquoi avez-vous choisi d'apprendre le français? Euh, je j'ai choisi le français parce que, heu, parce que je mon want मैम लाइक want को क्या बोलेंगे? Je veux, Je veux j'aimerais, je voudrais, je voudrais OK, yeah. So j'ai choisi le français parce que je voudrais perma résidence permanente au Canada. je voudrais atteindre. I would like to achieve my permanent Atteindre. residency. Je voudrais atteindre ou j'aimerais atteindre Je ou voudrais present tense में बोलो atteindre. तो je souhaite. I wish to obtain. Je Je souhaite souhaite atteindre je souhaite
je souhaite atteindre Ma résidence permanente. permanente. Yes, ma résidence permanente. Je souhaite, soit attendre, Atteindre. Je soit atteindre, souhaite je atteindre. souhaite atteindre ma résidence permanente au Mhm. Canada. Très bien. C'est bien? Yes, ma'am. Yes, je souhaite atteindre ma résidence permanente au Canada. Atteindre is, no, actually, atteindre is for a goal. You achieve, I would like to attain, obtenir, to obtain. Atteindre, obtain, sorry, my bad. Je voudrais obtenir ma résidence permanente Oh, au Canada. Atteindre is to obtain, but it is to obtain goals, to achieve more than to obtain. To obtain is to get. So, obtenir ma résidence permanente au Canada. ये sentences आप लिख रहे हो या मैं लिख के दूं? मैम मैं खुद लिख के आपको मैं कॉपी पे लिख Hmm. लूँगी। मैम मैं कॉपी हाँ, पे लिखूँगी, मुझे कॉपी पे लिख के याद हो जाता है। बस ठीक है लिखो फिर. ये answers खुद लिख लेना, okay? The verb we used was obtenir. We used the verb souhaiter and we used the verb obtenir. ठीक है? Je souhaitais obtenir ma Je souhaitais नहीं, je résidence. souhaite. Last E-E-S-E and E-N-T, silent होते हैं. They are just there to give sound to the consonant. Je Je souhaite souhaite. obtenir je souhaite obtenir ma résidence permanente au Canada. Permanente. Gender number agreement. Permanente, Well, te ऊंचा नहीं बोलोगे permanente, pour permanente. permanente Mhm. au Quelle est Canada. votre plus grande difficulté? Ma plus grande difficulté est la grammaire et la prononciation. Et la grammaire et la prononciation. OK. Quelle partie du français préférez-vous? Quelle partie du français préférez-vous? Je préférais parler Je préfère. Je préfère parler en français et apprendre du nouveau vocabulaire. Je Nouveau préfère. vocabulaire. And so say je préfère, you could have just said j'aime, right? Yes, ma'am. Yes, so j'aime, repeat your question, repeat your answer. Je Que, préfère Mhm. parler en français, apprendre de nouveaux vocabulaires. Et apprendre de nouveaux vocabulaires. Okay, clear? Yes, ma'am. Okay, then, आदित्य आ जाता है हमारे पास. Comment pratiquez-vous le français? Je Yes. pratique le français en regardant des vidéos. Yes, pratiquant, नहीं, je pratique. Je pratique le français en regardant des vidéos. Okay. En pratiquant, en regardant des vidéos. Très bien. Okay. आगे हमारे पास क्या आ सकता है? आगे प्रश्न क्या है? Comment pratiquez-vous le français Rolia? So push questions. For every short answer, I need to ask pourquoi, depuis quand, donner un exemple, comment pouvez-vous améliorer cela? So if I come back to your question, pourquoi avez-vous choisi le français? Vous avez dit, je souhaite obtenir ma résidence permanente. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez habiter au Canada? Pourquoi voulez-vous habiter au Canada? Pourquoi voulez-vous habiter au Canada? Yes. Pourquoi voulez-vous? Pourquoi voulez-vous la résidence permanente au Canada? Pourquoi voulez-vous la résidence permanente au Canada? Pourquoi? मैम फ्यूचर को अविनय कहते हैं ना? Yes.
vous obtenez la résidence permanente au Canada parce que je souhaite, Je souhaite. je souhaite mon avenir ici. नहीं दोबारा okay, it's quite good. Oui, rephrase करो दोबारा. Parce que je souhaite. Je souhaite. थोड़ा push yourself a little bit. You can do this. Je, Pourquoi je, voulez-vous habiter au Canada ou pourquoi voulez-vous obtenir votre permis, votre résidence permanente? Canada qui plus points pour nous. Why did you choose Canada? le Canada le Offre. Canada offre de bonnes possibilités d'emploi, Mhm. en bonne qualité environnement, And en bonne qualité de vie, une bonne qualité de vie, safety and equality for women. You being a woman, acknowledging this part is very good for you and a very valid point. So safety and equality for women, sécurité et égalité pour les femmes. sécurité et Égalité, equality égalité, pour les femmes. sécurité et Canada offre 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 sécurité, égalité, la femme, la sécurité et la égalité sécurité, pour les femmes. la sécurité et égalité pour femmes, Pour les femmes. pour les femmes. Article in front of every noun. Je vous obtenez la résidence permanente au Canada parce que je souhaite mon avenir ici. Le Je Canada souhaite offre, mon avenir ici. je Je souhaite, souhaite. What? je souhaite mon avenir ici. Nee. You're missing a verb. Je souhaite mon avenir. Construire, Yes. Je je souhaite. souhaite comme Nee, okay. Construire, yes, but construire, là, synonym. Construire is to build. So you build confidence, but in English we say build confidence. In French, build becomes bâtir. So un bâtiment is a building, but bâtir is the verb to build. Construire is to construct, is to literally बनानी a building. Physically, एक ईंट के ऊपर ईंट वो construction में आ जाता है. But build as in goals, you build your goals, you build your future, c'est bâtiment. bâtir mon avenir. Vocab. Je souhaite bâtir mon avenir ici. Le Canada offre Offre. de bons Offre. Le offre, verbe is offrir. So, offre, पहले आएगा. Offer is English. Offrir, offre. offre de bonnes possibilités d'emploi, Bonne. Une possibilité, bonne possibilité. bonne possibilité d'emploi, égalité, Égalité. Equa é- is English. Égalité. Equality. safety, le safety, sé- Le safety नहीं है भाई. sécur- Sécurité. sécurité, Mhm. equality का क्या था? Égalité. Sécurité et égalité pour Mhm. le femme, Pour les femmes. pour les femmes, Hmm. pour les femmes. Yes. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Clear है? Yes, ma'am. तो ये आप बोल सकते हो बड़े आराम से. Yes, ma'am. मैं ये लिखूं कि आप लिख लोगे खुद? कोई जरूरत नहीं लिखने की. मैं लिखती हूँ मैम क्लास के बाद सारा. Okay. ठीक है. फिर आ गया आपके पास. Donnez un exemple d'une meilleure qualité de vie ici qu'en Inde. Sorry, ma'am. Donnez-moi un exemple d'une meilleure qualité de vie au Canada versus en Inde. Donnez un exemple de meilleure qualité de vie. Give an City example for a better in quality of Canada life. and
बिल्कुल, ओके। Qualité de vie. Donnez-moi un exemple. ओके। Comparé au le Canada à l'Inde. Comparez votre vie. Comparez le nez. Comparez votre vie au Canada à votre vie en Inde. Euh, Mm-hmm. Patapat. You got that questions. You cannot stop to think so much. la nourriture est de meilleure qualité et plus variée qu'en India. En Inde, En Inde, j'aime aussi la sécurité et la qualité de vie au Canada. okay. All right. J'aime So, j'aime aussi la sécurité et la qualité pour les femmes pour de les vie au femmes. Canada. OK. Qualité de vie pour les femmes. Ou qualité de vie des femmes. Of women. Au Canada. Des vies de femmes au Canada. Yes. Better sentence. So, you went from telling me le grammaire est difficile, c'est meilleur ici que la qualité de vie is better. So your sentence instantly you've broken to a better structure. Capiche? D'accord, सिर्फ d'accord. 2 मिनट लगे हैं. You can do this. So, coming back. Ade, speaking structure of the day, you need to memorize your opinion, connectors, à mon avis, je pense que, je crois que, selon moi. Simple है, ये सारे आते हैं. Reason देनी है तो parce que, because, car. Contrast करना है, mais, पर B1 level पे मैं पहला नहीं आना चाहिए, पहले आपका cependant, pourtant, par contre, même si, d'un côté, de l'autre côté, c'est-à-dire, example के लिए आ जाएगा, फिर आपका लास्ट आएगा मैं A1 में शुरू करते हैं, so A और मैं very useful, पर सेकंड थर्ड नंबर पे ले आते हो, आगे आपका cependant आ जाता है, par contre, ठीक है, on the other hand, और आपका आ जाता है en revanche, on the other hand, on the contrary, au contraire, contrairement, etc., etc., etc. वो मैं बारे में जाऊंगा, ठीक है? So ये थोड़े से रट्टा मारने पड़ेंगे, then you have to use them every day. Now, grammatical recall and verb activation. Present tense. What is the rule for present tense? What is it used for? Present tense कैसे use होता है? Present tense? Hello? Sujet Mm-hmm. plus Plus. sujet participe passé. भाई present tense है. Lino. Okay. Sorry, ma'am. कोई बात नहीं. So, regular verbs ending in E. ES, EONS, EZ, ENT. Tanya मेरा. चलो, terminaison. Right? फिर आ रही हमारी बारी IR verbs की. IR कैसे खत्म होता है? IS, IS, IT. मैंने एंटर नहीं दबाया. And then ONS, finissons, finissez, and
S-S-E-N-T. Il finissent. Yes कि नहीं? Yes, ma'am. वो भी लिख दूं है क्या ऐसे एंडिंग्स ही रहने दूं? Ma'am, ending zero. याद रह जाएगा? Yes, ma'am. मेरे एंडिंग कहाँ गई? ओए, अभी तो लिखा मैंने. Ok, so je finis, tu finis, ils ont Elle est fini, fini nous et nous finissons, finissons. Vous vous finissez. finissez, Elle elles finissent. finissent. ठीक है? फिर हमारे आरी में क्या आ जाता है? J'attends, so j'attends, Yes. tu attends, il attend, nous attendons, Mm. vous Vous attendez, attendez. ils attendent. Vous attendez. ठीक है? ये तो हो गए Yes, ma'am. हमारे रेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर के सब कुछ बदलते हैं, तो वो हम आगे देख लेंगे. ठीक? Yes, ma'am. यस? Yes, ma'am. याद आ गया ये? ये ठीक है? Yes, So, ma'am. present tense is used for अभी के जो actions हैं, current actions. Je travaille aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui. Mhm. And it is used for habits. Je me réveille. Je pratique le français tous les jours. And for general facts. La langue est une française internationale. So, regular present tense is used for current actions, जो हम अभी कर रहे हैं. For our habits, daily habits हुए, के regular action verbs की habits हुए. Je pratique le français tous les jours. Je me réveille à 6 heures tous les matins. And for your general facts, le français est une langue internationale. Le Canada permet une chance à la résidence permanente avec le test de français. Yeah? आगे Yes, हमारे ma'am. irregular verbs and auxiliaires être and avoir. So, je Je suis, suis, tu es, il est, et nous sommes, vous êtes, ils sont, ils, elles sont. So, ils, je elles suis sont. motivé. Je suis Avoir. fatigué. Mhm. Nous sommes regardés Nous un avons, film. nous sommes, Nous nous avons, avons. nous avons regardé un film. Mhm. J'ai, tu as, il, elles ont, un, nous avons, vous avez, ils ont, elles Yes. ont. So, j'ai plusieurs objectifs. I have multiple goals. That is your sentence example. ठीक है ना? So, aller. J'ai une pomme. J'ai un Je vais, compte. Yes. je Je vais, vais. tu vas, Mhm. elles on va, nous Mhm. allons, vous allez, ils vont, elles vont. Très bien. Je vais améliorer mon français. Améliorer. J- Infinitif. améliorer. IR. Améliorer. Fait. Améliorer. Je fais. Tu fais. Ils l'ont fait. Nous faisions. Hmm? Vous faites. Faisons. Vous Nous faites. faisons. Vous Vous faisiez faites. bien, Et Gaston. non, faisait غلط à fait test. Il est exceptionnel. Vous Vous faites. faites. Ils l'ont fait. Font. Present tense Ils में l'ont font. exceptionnel. Ils, elles font. Je, On j'ai est. fait des efforts. Je fais des efforts. I Des am efforts. making efforts. IS. L'imposé. So, B1 useful structures. Vouloir plus infinitif. Vouloir. Je veux Vouloir. progresser. Pouvoir plus infinitif. Modal verbs. Je peux communiquer. Devoir plus infinitif. Infinitive is ER, right? Yes. Okay. Yes. So, je dois pratiquer davantage. I must practice. Vouloir is to want or desire. Pouvoir is to be able to or can. Devoir is I have to or I must. It's an obligation. So, je dois pratiquer davantage. Repeat. Voulez, voulez plus infinitive, je veux Vouloir, progresser. vouloir, O-I-R. Vouloir, vouloir plus infinitive, je veux progresser. Pouvoir plus infinitive, je peux communiquer.
devoir plus infinitive, je dois pratiquer davantage. Davantage. E-N-I-N-O-N après sounds en, on. Davantage. E-N, en. Davantage. Mhm. Essayer de infinitive, yes. J'essaie de parler régulièrement, Régulièrement. régulièrement. Mhm. J'ai, j'ai Mais, donne-moi ces 25 ans. cinquièmes. J'ai 25 ans. Je prends, je peux améliorer, Améliorer. améliorer mon expression orale. Mhm. Je peux améliorer mon expression orale. Très bien. Ensuite, Vraiment, give a better. oh, verb button. Okay. Yes. So, teacher gives verbs and you give a sentence. So, pouvoir. Pale example balay ka. Pouvoir, c'est ça sentence बनाओगे. So, je peux comprendre des conversations simples. ठीक है? Ready? Vouloir. Vouloir. Mhm. Euh, tu veux boire un café? Tu veux boire un café. OK. Allez, devoir. Tu dois finir tes devoirs. Tu dois finir tes devoirs. Très bien. Tu dois Then, finir tes allez, devoirs. apprendre. Apprendre. Euh, je, je prends le français à l'école. J'apprends le français à l'école. Pratiquer. मैम pratiquer का मतलब क्या होता है? Pratiquer is to practice. Like practice. Yes. To practice. Je pratique le français tous les jours. Pratiquer नहीं होगा क्या होगा? Pratique. Yes. Je pratique le français tous les jours. Faire aller, améliorer. Améliorer. Je veux améliorer mon français. Je dois améliorer mon français. Très bien. Je, Je dois améliorer mon français. Très bien. essaie, j'essaie de parler français tous les jours. J'essaie de parler français tous les jours. OK. So vocab booster theme, learning and personal progress. Apprendre, upgraded becomes développer ses compétences. Partitional G. This is your vocab table. So apprendre, instead of using apprendre every time, you will say Développer. j'essaie ou j'aimerais développer mes compétences. ओके, पांच A1 और A2 में है, जो B1 में जाना है, तो हमने डेवलपर से कॉम्पिटेंस बोलना है। ओके, ओके, ओके। Yes. Apprendre, développer ses compétences, parler mieux, mieux, Parler mieux, mieux, speak better, c'est mieux, améliorer. améliorer son expression orale, Mhm. difficile, exigeant, Exigeant. exigeant, Exigeant. exigeant, important, important, essentiel, Important. Essentiel. essentiel. Mhm. Essayer, faire des efforts, problème, difficulté, bon, bénéfice, Mhm. bénéfice, Il est plus aime, benefit, it's aimer, beneficial. Bon is aimer, good. Benefit is beneficial. aimer, apprécier, Mhm. apprécier, Apprécier. apprécier. ठीक है Now, आगे ऊपर synonyms. नहीं ये एक बार दोबारा सुनाओ Apprendre, développer ses compétences,
parler mieux, améliorer son expression orale, Mhm. difficile, exigeant, importante, essentiel, essentiel, Essentiel. faire des efforts, problème, Mhm. difficulté, bon, bénéfice, aimer, apprécier. Apprécié. Okay. Then we have our synonyms and antonyms. So synonyme, essentiel, nécessaire, indispensable. Important tra synonyme. Essentiel, Essentiel, nécessaire, essentiel, nécessaire, indispensable. In, in, indispensable. indispensable, indispensable, Indispensable. Sable. indispensable, Yes, indispensable. indispensable, Très bien. indispensable, Yes. And then inutile, inutile. inutile, Yes, inutile. secondaire, Secondaire. Primaire, secondaire, primordial, secondaire. inutile, secondaire, Primordial is compliqué, primordial. So first, primarily, important. Primordial importance, primordial. Secondary is your not the first importance, secondary. So secondaire, inutile. C'est-à-dire? inutile, secondaire, Then, compliqué, complicated compliqué, is not the same as important. It's not the opposite of important. Vital. difficile, quoi. Oh, okay, okay. Difficile, compliqué, Compliqué, exigeant, exigeant. étonnement à dire simple, Okay. facile, accessible. Hmm. Then améliorer का synonyme आ जाएगा progresser. मैं ऊपर कर दो. Progresser, या आपको क्लियर है? reinforce. Yes, ma'am. Okay. Renforcer, Améliorer का renforcer, renforcer, renforcer. renforcer, Mhm, progresser, renforcer, développer, mhm. antonyme diminuer, Diminuer. regrosser, Mhm. regrosser. Okay. Se diminuer qui ça face à la terre. Redresser, redresser, to regress. Se diminuer, to diminish, or to Regresser. decrease, to diminish, to regress, to go back. ठीक Yes, ma'am. ये आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे आपको याद करने ठीक है ना so upgrade your sentence transform le français est important to selon moi your opinion apprendre le C'est le français est mot. essentiel this is your main claim reason parce que cela peut offrir de nouvelles opportunités repeat selon C'est le moi moi. C'est le moi. Apprendre le français est essentiel parce que mhm, cela peut offrir de nouvelles affaire नहीं है opportunités. offrir cela Offrir peut de offrir nouvelles. mhm, Cela peut offrir de nouvelles opportunités. yes, cela peut offrir de nouvelles opportunités. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, फिर हमारे पास क्या आ गया? Le français est difficile. Upgrade these. अभी इसका मेरे को sentence बनाते दो. Oh, um, le français est une langue difficile, mais intéressante. Intéressante. Une Pas langue. intéressant, Mhm. intéressant, Te. um, Intéressante. Féminin. intéressant. OK. Donc, le français est une langue difficile. Non, est un difficile quand même. Difficile. Exigeant था ना मैम सिनोनिम difficile का? Mhm. Exigeant.
OK. Le français est une langue exoncée, mais intéressante. Intéressant. Okay. आगे अगला वाला क्या हमारा j'aime Même apprendre is that complete sentence for j- now j'aime apprendre. Hmm, j'aime apprendre. J'aime apprendre de nouvelles choses chaque jour. Chaque jour. j'apprends de nouvelles choses chaque jour. Chaque jour. Hmm. Chaque jour. Complete sentence बोलो Mon, mon hello complete sentence. Je m'apprends. so you give your opinion then you give me your reasoning you give me the main sentence that we're answering j'aime apprendre what or j'aime apprendre generally I like to learn because and then you give your reasoning for it support TEE give me your point I like to learn then give me your reasoning for it explanation and an example very OK. brief explanation but an explanation nevertheless ठीक है so complete your Yes, sentence ma'am. j'aime apprendre parce que you know, j'aime apprendre a specific thing or j'aime apprendre something I like to learn I like learning some people learn all their lives whether they have degrees or not some people hold OK. degrees and know nothing so it depends on how you Je want to m'apprends. portray it. Mhm. Je m'apprends de nouvelles choses chaque jour parce que ça améliore mes compétences. Ça améliore mes compétences. Okay, but Ça ça becomes améliore. informal. Ça becomes informal. We are trying to make it formal, right? Yes, ma'am. Yes. So how are we going to do that? इसको politely थोड़ा और formulate करो, ये देखो, selon moi, apprendre le français est essentiel parce que cela peut offrir de nouvelles opportunités, right? So थोड़ा सा indicatif के बीच में ले आओ. Yeah, it's very hot outside. अभी रुक जाओ. Okay, I'm in class. Just a minute. Sorry. J'aime apprendre parce que I like what you said. इसको थोड़ा सा indicatif में लाके थोड़ा सा polite है. Refine करो थोड़ा सा. थोड़ा सा refine. J'aime apprendre de nouvelles choses tous les jours. I like what you said. Continue on that train of हम thought. ओके वो कर सकते हैं je m'apprends ओके उसमें मैं हम ये बोल सकते हैं अगर मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूँ je m'apprends je m'apprends des nouvelles choses chaque jour parce que euh, parce que il peut améliorer mon niveau, improve my level niveau. नहीं आप अभी जनरल की बात कर रहे हो फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हो जो लेवल की बात आई but you can say I like Ah, to learn new things every day because it helps to develop my personality or my professionalism knowledge. my knowledge so how are you going to say that so knowledge is connaissance right so I like what how you started maintain that part keep that part j'aime apprendre de nouvelles choses chaque jour car instead of parce que car becomes first parce que after parce que हमने A1 में किया car हमारा A2 या B1 में आ गया it is the same synonym सिर्फ a bit more car cela contribue it contributes to my personal development or my professionalism or my knowledge building so cela contribue à développer il y a au développement de mes connaissances ou de ma personnalité
and so on so forth. एक बार दोबारा बोलूँ मैम मैं लिख के ये दूँ? मैम ये वाला बोल सकते हैं अगर हम बोलें je prends de nouvelles choses chaque Choser jour, नहीं chose. chose chaque jour, parce Mhm. que ça fait de moi une Meilleure meilleure personne. personne. Yes, parce que ça fait de moi une meilleure personne. Meilleure personne. But again, ça fait de moi becomes a little bit Formal. informal. 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 So इसको थोड़ा सा formal करो कैसे कर सकते हैं? सा को हटा दो. Simply fait, your sa is your informal. सा का क्या है? It is cela est. Ou cela fait. So सा हटा के cela लगा दो. आपका formal. Parce que cela fait Moi, de une moi meilleure une meilleure, meilleure personne. Ça, most of the time, your meilleure सा, personne. से, ये क्या है? दो combine किए हुए हैं ना? तो combine हटा दो, आपका formal हो जाएगा. Ça fait, Yes, ma'am. c'est moi, cela fait de moi une meilleure personne. You can add this to that previous sentence. J'aime apprendre de nouvelles choses chaque jour car cela contribue à mon développement personnel, professionnel et intellectuel et cela me rendant ou me faisant de moi une meilleure personne. Full stop. Ou cela me fait, cela fait de moi une meilleure personne. It makes me a better person. So more complete, add your adjectives to support what you're saying. Make it personal, but make it formal. So nobody can argue with you. Sound right? Yes, ma'am. Repeat the sentence one more time. Repeat the sentence. बोल रहे. Je prends. Yes, ma'am. Ma'am, non, मैं बोलती हूँ. Euh, je prends, je prends de nouvelles choses chaque jour, parce que seul fait de moi une meilleure personne. Une meilleure. Meilleure personne. Mhm. Meilleure, Une meilleure meilleure. personne. Yes. But इसको थोड़ा सा आपने, I just told you, you have to expand a little. Yes, ma'am. नहीं तो cela fait de moi une meilleure personne is very general. So when you're trying to prove a point, then you have to go into a little bit more specifics. So Yes, how ma'am. does it make you a better person? What it helps to develop my personality. It helps me to develop my professional skills. It helps me to, so वो चीजें become necessary to add on. Right? Yes, ma'am. So necessary add-ons. Necessary add-ons आप कैसे करोगे? Hello? Yes, ma'am. बोली जाओ. सोचो जरा. You're on the right track. बोली जाओ. You're doing a very good job today. J'aime apprendre de nouvelles choses chaque jour, car cela contribue à mon développement Contribuer नहीं, personnel. contribue. Contribue à mon développement personnel, professionnel et intellectuel. Cela fait de moi une meilleure personne. Une meilleure. Une meilleure personne. Meilleure, Hmm. meilleure All personne. right. फिर आ गया हमारा je veux parler français. Give me a sentence with that. Je veux parler français couramment un jour pour pouvoir voyager dans un pays francophone. Pour pouvoir voyager un jour हटा दो. The rest is very good. Je veux parler français couramment ou fréquemment ou what did you say? Je veux parler français. Je veux parler français couramment pour Mhm. pouvoir voyager dans un pays Un francophone. pays. Francophone. But then they'll say, but you're already Pays. living in a pays francophone. Then they can counter Même you. But like other vous habitez countries. déjà. Ah, so then dans un an, dans d'autres pays. Je voudrais pas voyager euh, à d'autres pays francophones. Okay. Mhm. Other countries, because you're already in a country.
in a French country. ठीक है ना? So, Canada j'ai is a un French problème. country? Canada is a hello. No, Okay. ma'am. Canada is a French-speaking country, darling. National languages. Canada has two national languages, English and French. Both are national languages. बट खाली मॉन्ट्रियल तभी मॉन्ट्रियल अपने आप को बोलता है अलग करने के लिए वो कनाडा इन्होंने से। ज्यादा ऐसे कर दिया है, पहले हर जगह पे था। ये उनकी पॉलिटिकल जिमिक है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। Canada had a dual identity. It's a French-speaking country. ओके मैम। It is now, okay, so it's not exclusively French, but it is a French speaking, it is a bilingual monarchy. It recognizes both English and French as official languages. Since it has both, it was invaded or discovered by French and English equally. So it is equally French colonial as well as British colonial. ओके। Yeah. It's just that the Alba has become the province of Quebec, but आप Quebec से east चले जाओ, सारा French है. New Brunswick, they speak French just as much as English. Nova Scotia is French as much as English. Acadian, they speak Acadian. They have the Acadian culture, which is Nova Scotia is Scotland. People from Scotland landed in Nova Scotia. People from Ireland and from um, Nova Scotia, Ireland, and the Isles landed in New Brunswick. French landed straight from the Fleuve Saint Laurent to Quebec or Montreal. The English came the other way, they went further in and they landed west. Before this, there was a time when the majority of Canada was French, and then the English followers and pushed them back to the Quebec area. But before this, Canada was French. ओके। Hmm. Canada is a French. लास्ट वाला। Ada, j'ai un problème. J'ai un problème pour apprendre le français à cause du manque de pratique, Yes, à cause d'un manque de pratique orale. pratique orale. Hmm? अब अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा सा और बढ़िया बोलो, थोड़ा एक्सपैंड करो, एक्सपैंड कर सकती हो? Yes, ma'am. कैसे? कैसे? Um, एक रीज़न तो मैंने उसको दे दिया कि लाइक मैं प्रैक्टिस नहीं करती, मेरे को तब भी ही लाइक फ्रेंच हो नहीं रही। Definitely. सेकंड एक और रीज़न दे सकती हूँ? हम्म, एक और दे सकती हो? एक और दो? अ, उम, j'ai un problème, j'ai un problème, हम्म, apprendre le français, cause du manque de pratique parce que je travaille aussi et je suis souvent fatiguée. ok. Parce que je travaille souvent, je suis souvent fatiguée. Ok. एक बार दोबारा बोलो. J'ai euh, j'ai un problème, prendre le français
à cause de manique de pratique. Manique de M- fatigue, Manique de pratique. Lack of manque, practice. manque. Manque de pratique. Cause Mhm. du manque de pratique parce que je travaille aussi et je suis souvent fatiguée. Ok. Je travaille et je suis souvent fatigué. Fatigué. Ok. So, अब आ रही है हमारे oral production lab जो हमने बोलना है. ये वाला हमारा हिस्सा रह गया. ये हम कल करें. Yes, ma'am. Correct. ये सारा नेक्स्ट टाइम ये 20 मिनट्स का हमारा रह गया यहाँ पे. और इसके आगे मॉडल आंसर से स्पीकिंग. बस स्पीकिंग का हमारा रह गया. सो हमने आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाया बट ये बहुत जरूरी था. सो यू नो योर फ्रेंच. इट्स नॉट दैट मैम मेरे को नहीं आता. पानी में नहीं हो, डूब नहीं रहे हो. सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करना है. ठीक है. Yes, ma'am. फील अ बिट बेटर नहीं? Yes, ma'am. थोड़ा डाउट उतरा अपने से या नहीं? Yes, ma'am. ओके. सो कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे. ठीक है. Yes, ma'am. ऑलराइट. सो आई सी यू टुमारो. Yes, बाय ma'am. बाय. मैम वेडनेसडे को मैं लाइक लगाई तो मैं ट्रक में क्लास लगाऊंगी क्योंकि मैं वैंकूवर जा रही हूँ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। सो उस टाइम ओके. मैं वापस मैं ट्रक में आ रही हूँ तो अगर मैं नहीं लगा पाई तो लगाऊंगी तो फिर उधर से लगाऊंगी। अगर नेट नहीं हुआ रास्ते में तो नहीं लगा पाऊंगी। कोई बात नहीं. मेरे को पहले मैसेज डाल देना एटलीस्ट, अब से मेरे को याद यस रहे. मैम। ठीक है ना. यस मैम। यस ऑर्डर मैम। तो लगा लिया, क्यों? ठीक है. नहीं तो हम टाइम बदल के किस दूसरे टाइम पे लगा लें. ठीक है ना. यस मैम, जब बोले. क्योंकि मैं लाइक वेडनेसडे को मेरी सुबह 8 बजे की अपॉइंटमेंट है वैंकूवर। सो मैं ट्यूसडे रात को जब वेडनेसडे चढ़ेगी मैं 12 बजे यहाँ से ट्रक में निकल जाऊँगी। ट्रक मैं में क्यों? सतीश के साथ। मैम पोपा राइड यहाँ से हो रही है बट ट्रक सस्ता पड़ रहा था तो हमने ट्रक ही करा लिया। हाँ हाँ वो ठीक लाइक है. बंदा यहाँ से जा रहा है, मैं और सतीश जा रहे हैं तो सुबह-सुबह वो हमें 5 बजे छोड़ देगा मेरे फ्रेंड के घर पे। हम लाइक कपड़े-कुपड़े चेंज करके फिर वहाँ से ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएँगे। फिर वो रात को 7 बजे वहाँ से लेगा और लाइक 12:30 या 1 बजे हमें यहाँ पे छोड़ेगा। तो क्यों, फिर मुझे मैं रहने दे ये क्लास करने को जैसे यही ही. यही करेंगे कि लाइक वेडनेसडे को क्लास नहीं लगाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, फ्राइडे मैं सैटरडे तक क्लास लगा लूँगी। ठीक लाइक है. फ्राइडे को भी क्लास लगा लूँगी, फ्राइडे छुट्टी होती है ना तो फ्राइडे को भी क्लास लगा लाइक आपके पर मेरी सैटरडे। फिर 8-9 बजे मेरा एक बैच शुरू हो रहा है. सो 8-9 बजे नहीं हो सकता. फिर वो, या आप मेरी रात होगी तो आपकी अगले दिन की सुबह होगी. मैम वो वो मैं हो काम सकता है. पर होंगी। वो हमें करना पड़ेगा कुछ. चलो वो टाइम हमें दोबारा देखना पड़ेगा. वो दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि मेरी मेरी क्लास होगी वहाँ पे. तो मैं यस देखती हूँ मैम। कैसे. ठीक है. टाइम हमें थोड़ा सेट कोई नहीं करना. मैम। यस मैम। ओके. ओके. ओके सो मैम। आई विल सी यू टुमारो. ओके मैम। बाय बाय. सी यू टुमारो मैम। बाय। अदे में मैम।